everybody. A very warm welcome in this series project I create. This is your tutor today, Arjuman Fatma, and guys, I'm going to continuously providing you the lectures related to the journalism and mass communication in upcoming lectures videos. And this is my first video in which I will tell you the introduction to journalism. So, without taking much more time, let's start. Guys, in this video, we will discuss the introduction of journalism, that is meaning and history, and types and elements of journalism, reporting, writing, and editing, and at last, its principles of journalism. So first, start with its meaning. Guys, journalism is just an art and craft of reaching and teaching the masses. Means journalism is a creative way where the large audience is present, and we just have to teach them, we just have to provide them a new content, just updated content. In other words, it is the process of collection, preparation, and distribution. Focus on this word, that collection. Here collection means to gather the news. Okay, if we want to broadcast anything, then first we have to collect that. Okay, to gather the news, and then preparation, it includes the process of editing. Okay, because when we get the content, then it is just raw material, it is just an raw material, and we have to prepare and build it is an in an news style. Okay, so it is a process of collection, means gather the news, and then preparation means doing it editing, and then distribution means broadcast the news content and related content through print media, electronic media like newspaper, magazines, books, blogs, TV, radio, etc. Guys, when we talk about journalism, then we have to understand what the news is, what the actual means of news. So news is just an information, and it is not just an information, it is information about current events and which has facts. Okay, if there is no facts, that is not news. So news is the information about current event which has facts, and it may be provided by any mode. It can be broadcast through television, it can be broadcast through radio, newspaper, blogs, new age media. There's many more medium present nowadays. So now next, come on the next slide. It's history and development of journalism in India. Guys, if you are belong from the field journalism mass communication, and if you are preparing for entrance exam of journalism, then history is very important for your exam perspective also. Okay, so it's history in print media. The first newspaper in India was circulated in 1780. Okay, first newspaper was circulated in 1780. It is developed by James Augustus Hickey, and the name was Bengal Gazette. Bengal Gazette means Bengal Gazette was the first newspaper in India, and it is developed in 1780 and developed by James Augustus Hickey. On May 30, 1826, the Udant Martan newspaper was developed. It was the first Hindi language newspaper, and it is developed by Pandit Jugal Kishore Shukla. Okay, these terms are very important. Okay, first newspaper was developed in 1780, and that name was Bengal Gazette, and the first Hindi language newspaper was developed in 1826. That name was Udant Martan, and after that, the Urdu language newspaper was developed in 1836, and it is developed by Maulvi Muhammad Bakir, and the newspaper name was Delhi Urdu Akhbar. After it, India's press in 1840 was a motley collection of small circulation daily and weekly sheets. क्या होता है कि जब ये डेवलप हो जाता है, तो आफ्टर इट द न्यूज़पेपर वाज मतलब सर्कुलेट होने लगा था डे बाय डे, और वीकली ये सर्कुलेट हो रहा था. ठीक है, स्टार्टिंग में जो रिच पर्सन होते थे ना, जब इंडिया में न्यूज़पेपर आया तो ओनली रिच पर्सन ही इसको परचेज कर पाते थे. ठीक है, क्योंकि इसके प्राइस जो थे वो हाई थे. स्लाइटली ये वीकली बेसिस पे, डेली बेसिस पे सर्कुलेट होने लगा. आफ्टर इट द एंग्लो इंडियन पेपर्स प्रमोटेड प्योरली ब्रिटिश इंटरेस्ट. ठीक है, जो एंग्लो इंडियन होता है, तो एंग्लो इंडियन कौन होता है? एंग्लो इंडियन होते हैं द पर्सन हु आर लिविंग इन द इंडिया बट बिलोंग फ्रॉम द अब्रॉड कंट्री. ठीक है, तो एंग्लो इंडियंस
promoted purely British interest newspaper, क्योंकि तब क्या था, हिंदुस्तान के अंदर ब्रिटिश राज था, तो दे आर पब्लिशिंग जस्ट फॉर द ब्रिटिश इंटरेस्ट, ठीक है। तो यानी येलो जर्नलिज्म स्प्रेड होने लगा था। अब नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज येलो जर्नलिज्म। गाइस, येलो जर्नलिज्म मींस व्हेन द जर्नलिज्म, जब जर्नलिज्म जो है ना प्रिजुडाइज हो जाता है, जर्नलिज्म बायस्ड हो जाता है, ठीक है, एक्यूरेसी नहीं होती, बैलेंस नहीं रहता उसमें, तब वो बायस्ड होने लग जाए। किसी भी कंपनी, किसी भी इंटरेस्ट, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के अगर इंटरप्ट होने लग रहा है और उसी के फेवर में बात हो रही है, दैट इज येलो जर्नलिज्म। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, ठीक है। After it, the Englishman Robert Knight in 1825-1890 founded two important English language newspaper that reached a broad Indian audience. दो न्यूज़पेपर डेवलप हुए जो इंग्लिश लैंग्वेज में थे, ओके, और उन्होंने बहुत ही ज्यादा रीच पाई, ठीक है। उनका नेम था द टाइम्स ऑफ इंडिया, जो आज भी बहुत पॉपुलर है, टॉय टाइम्स ऑफ इंडिया एंड द स्टेट्समैन। After it, radio and television, the history of radio broadcasting begins in 1920 and reached its apogee in the 1930. 1920 में रेडियो का डेवलपमेंट होता है, ठीक है, और जो जर्नलिज्म है वो कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर से रेडियो पे शिफ्ट हो जाती है। इन 1940 टेलीविजन के एक्सपेरिमेंट होता है बिफोर वर्ल्ड वॉर सेकेंड, एंड फिर जर्नलिज्म कहीं ना कहीं रेडियो से टेलीविजन पे शिफ्ट हो जाती है। लेकिन ये सभी मीडियम कहीं ना कहीं आज भी एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि न्यूज़पेपर आज भी बहुत एग्जिस्टेंस है। पीपल वांट टू रीड न्यूज़पेपर, पीपल आल्सो वांट टू listen radio because it is very facilitative medium. When we are driving, when during driving we are not able to watch television, no, we can't read newspaper, then we can use radio, okay. After it, digital journalism after the development of internet. Let me do one thing. After the development of internet during 2000, a term is very popularized, that is free news, because nowadays with the help of digital journalism, with the help of digital equipment, with the help of internet, anybody can broadcast anything, ठीक है। I also, you also can do journalism very easily because we do not have to pay the subscription, ठीक है। तो हमें पे नहीं करना होता, it is very easy, ठीक है। But earlier it was very tricky. Next is about types. Here's the types of journalism, guys. Mainly journalism are of four types, that is print journalism, photojournalism, electronic journalism, and new age journalism. So first read with print journalism. When the journalism and the news is publishing and broadcasting through print media like newspaper, blogs, etc., it is called print journalism, ठीक है। When journalism is broadcasting through print media, it is called print journalism. Newspaper and internet publishing services includes the process, ठीक है। Let concern on its process. There is some process that we should follow during the print journalism, that are, first process is copy selection, copy collecting. Obviously, if we want to broadcast any content, then first we have to gather its information. First, we have to collect the copy. If you want to broadcast the news, then first you have to collect the copy. It can be through interview, it can be through the reporting, etc., and press release also. So first process is copy collecting, then editing, obviously because it is present in raw material, you have to edit then before broadcasting in editing and graphic designing. Then proofreading means you have to read it from top to till, अगेन एंड अगेन आप उसको रीड करके देखें कि दैट हमारे जो कंटेंट है वो उसमें प्रॉपर जो उसके प्रिंसिपल्स हैं वो फॉलो हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, कितनी उसमें एक्यूरेसी है, कितनी बैलेंस है हमारी न्यूज, देन सो proofreading. And final is publication, then you can broadcast it. Skills needed for print journalism. If you are belong from the print journalism and if you want to work in the print journalism, then you have to you have some these skills, like first is writing skill. You have good writing skills, means you have to know the style of news writing, you have to know that how the news is written, and what ethics, what principle we should follow while writing the news. So news good writing skills.
Then critical thinking. Obviously, if you are connected with journalism, then it is very necessary to have good mentality, to have a positive, to have a neutral mentality. Critical thinking, you have to build your thinking very deep, ठीक है? क्योंकि जर्नलिज्म में क्या है कि नॉर्मली हम कुछ भी लिख रहे हैं, ठीक है, इट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर राइटिंग. जर्नलिज्म में आपको बहुत ही क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए, बहुत डीप लेके जाके देना है, बहुत इन्वेस्टिगेटिव थिंकिंग आपकी होनी चाहिए. एंड फाइनल इज कमांड ऑन लैंग्वेज. ऑब्वियसली इफ वी वांट टू write anything, then learn first we have to good in that language. Okay, next is photojournalism. Photojournalism means the telling the story and broadcasting the story with the help of photos, just photograph. And the person who done this job is called photojournalist. Okay, in the photojournalism, you will use image to tell the entire story from start to finish. Okay, importance of photojournalism, it is very important, and it consists lots of importance because picture have an impact. Obviously, if अगर मैं आपको सिर्फ कुछ कंटेंट बता रही हूँ, इट इज नॉट एनफ. या लेकिन अगर मैं आपको उसको दिखा रही हूँ, ऑब्वियसली इट हेल्प टू रिमाइंड यू लेटर, ठीक है, आपको बाद में भी बहुत ज्यादा रिमाइंड करने में हेल्प करेगा. सो पिक्चर हैव एन इम्पैक्ट. Then images are easier for people to remember, ठीक है, as I already told you. Photographs can make a story more tangible, ठीक है, more trustable. It is not enough to tell the story. We also just show that, because when we show the images, when we show the visuals, then people trust on that, ठीक है. And last is easy to understand for illiterates. Obviously, newspaper only can read literate person who are eligible to read, ठीक है. And the radio only understand, only those person understand who are who know the language, who know that language. But images tell everything, and everybody can understand easily, even a illiterate person also. Okay, next is electronic journalism. Electronic journalism, it is also known as e-journalism and multi-platform journalism because it consists lots of platforms like television, print, radio, and online news. Okay, this is just similar to social media. Obviously, all the media that are electronic, you know, when we broadcasting the news through electronic media, it is called electronic journalism, which nowadays are most often created electronically. Social media also nowadays most often created electronically. Electronic media makes communication very easy because lots of people are connected with each other with the help of electronic media. We can take the example of social media. Nowadays people are interconnected with each other, with lots of here is a large number of audiences present automatically, ठीक है. It's important, it is very important because it consists mass audience, ठीक है. Large audience are present, pervasive, we can use anytime and anywhere, ठीक है. If we are in office, if we are in during driving, if you are at home, ठीक है, it is pervasive everywhere because social media is present everywhere. 24-hour availability, obviously it is available for 24 hour. There's no time boundation, ठीक है. 24-hour availability, and can use literate and illiterate. As I already told you, electronic journalism is very flexible medium because now here literate or illiterate both can understand easily. It include audio plus visual medium, ठीक है. दोनों मीडियम होता है. नेक्स्ट इज न्यू एज मीडिया. The rise of new age media has increased communication between people all over the world and the internet. It has allowed people to express themselves through blogs. ठीक है, न्यू एज मीडिया क्या है, नाउडेज ब्लॉग्स आर मतलब बहुत ही क्रेज है ब्लॉग्स का, वेबसाइट्स का. People are shifting from television to new age media because we a research also said कि nowadays people know information first with the help of social media. विद इन अ नाइट इधर तो कोई इंसिडेंट हुआ और उधर वायरल हो गया with the help of new age media. Through the blogs, through the website, videos, pictures, etc. It is really very important because it includes two-way communication. Two-way communication, it is very popular term in journalism. Two-way communication means if we take the example of television, there only anchor is speaking, but
हमें ऑडियंस का फीडबैक नहीं आ रहा है, ठीक है। इधर ही अगर हम एग्जाम्पल ले रहे हैं न्यूज़पेपर का, तो सिर्फ एडिटर उसको प्रिंट कर रहे हैं, बट ऑडियंस के व्यूज क्या है हम वो गेट नहीं कर रहे हैं। फिर रेडियो का एग्जाम्पल लें तो सेम थिंग है कि वहां पे सिर्फ एंकर और रेडियो आरजे जो होता है वो बोल के चला जाता है, लेकिन ऑडियंस उसके बारे में क्या पॉइंट रखती है हम नहीं अंडरस्टैंड कर पाते। बट द न्यू एज मीडिया इज द टू वे कम्युनिकेशन विद द हेल्प ऑफ कॉमेंट, हमें ऑडियंस के व्यूज का पता चल जाता है, क्योंकि इधर हमने वीडियो अपलोड करी, उधर हमारे कमेंट्स आए, लोगों के उस पर क्या विचार है वो हमें हैंड टू हैंड फीडबैक मिल जाता है, तो ये इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सेकेंड इज मास ऑडियंस, इट कंसिस्ट लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस, कंटिन्यूअस लर्निंग बिकॉज लॉट्स ऑफ कंटेंट्स आर अवेलेबल इन न्यू एज मीडिया, सो कंटिन्यूअस लर्निंग, फास्ट मीडियम, वेरी फास्ट, मतलब इधर इंसिडेंट हुआ और उधर वायरल हो गया, इट इज वेरी फास्ट medium. And fifth is worldwide, obviously it is connected worldwide, we can know anything about what's happening in other country, what happening in America, China, Iran, etc. So it is very good medium. Now it is about elements of journalism. Elements means जर्नलिज्म किस चीज पे बेसिक, किस चीज से मिल के बना है, इट्स एलिमेंट, इसके एलिमेंट्स क्या है। सो फर्स्ट ऑब्लिगेशन इज टू ट्रूथ, जर्नलिज्म इज टोटली बेस्ड ऑन ट्रूथ, ठीक है। जर्नलिज्म फर्स्ट ऑब्लिगेशन इज टू ट्रूथ। ट्रूथ क्यों है, एक्चुअली ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज नाउ डेज जर्नलिज्म इज जस्ट नॉट एन प्रोफेशन, it is the fourth pillar of our constitution, fourth pillar of our democracy after legislature, judiciary and executive. Media considers the fourth pillar, ठीक है, it is considered as fourth pillar of our democracy because it is the voice of citizen. तो इसका एलिमेंट्स, इसके प्रिंसिपल्स होना बहुत नेसेसरी है। तो इट्स फर्स्ट ऑब्लिगेशन इज टू ट्रूथ। Second, its first loyalty is to citizen because it is the voice of citizen. ठीक है, its essence is a discipline of verification. You know, journalism work as an watchdog. सर्विलेंस इसका प्राइमरी फंक्शन होता है, ठीक है, कि सर्विलेंस होना है, हर चीज पे आपको बस निगाह रखनी है, व्हाट्स हैपनिंग अराउंड अस, व्हाट्स हैपनिंग इन आवर कंट्री, व्हाट्स हैपनिंग इन आवर इकोनॉमी, बिकॉज इट इज द वॉइस ऑफ सिटीजन, ठीक है। तो वेरिफिकेशन, ठीक है। फोर्थ है ह्यूमन इंटरेस्ट, बिकॉज whatever we are broadcasting, it is necessary to have ह्यूमन इंटरेस्ट। अगर ऑडियंस का इंटरेस्ट नहीं है तो लोग नहीं देखेंगे, लोग सुनना नहीं पसंद करेंगे, ठीक है। तो ह्यूमन इंटरेस्ट होना चाहिए, बट वो बायस्ड नहीं होना चाहिए। इट डजंट मीन कि बायस, यहाँ पे ह्यूमन इंटरेस्ट का मीन्स है कि अगर आपकी जहाँ पे आप ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं वहाँ पे लोग जो है ना उस कंटेंट को समझते ही नहीं है, ठीक है। आप बिजनेसमैन के आगे अगर आप क्राइम न्यूज दिखाने लग जाएंगे तो दे विल नॉट टेक इंटरेस्ट, ठीक है। तो ब्रॉडकास्ट अकॉर्डिंग टू योर ऑडियंस, बी ट्रांसपेरेंट टुवर्ड्स योर मोटिव। आपका पर्सनल परसेप्शन है ही नहीं जर्नलिज्म, ठीक है। इफ यू आर फ्रॉम द फील्ड ऑफ जर्नलिज्म, तो जर्नलिज्म की फील्ड में देयर इज नो प्लेस फॉर योर ओन परसेप्शन, देयर इज नो प्लेस फॉर योर पर्सनल परसेप्शन। बी ट्रांसपेरेंट, वट एवर यू वॉन्ट टू टॉक, वट एवर यू वॉन्ट टू से, वट एवर यू वॉन्ट टू ट्रांसमिट, बी ट्रांसपेरेंट फॉर दैट। Next is accuracy. Accuracy and truth both are कहीं ना कहीं नो सिमिलर टर्म। accuracy must have accurate, अगर unaccurate होगा तो वो जर्नलिज्म है ही नहीं, वो न्यूज है ही नहीं, ठीक है। टाइमलेसनेस, people are not will not take interest if they already know, अगर उनको पहले ही पता है वो तो वो नहीं लेंगे ना जानने में इंटरेस्ट। तो टाइमलेसनेस, because I already told you that news is the information about current event, so timelessness। balance, if you are showing two perceptions and show both दोनों के, अगर तो आप दो पार्टी की न्यूज दिखा रहे हैं तो दोनों के परसेप्शन दिखाएं, दोनों के जो उन्होंने कहा है दोनों की बातें दिखाएं, बैलेंस न्यूज करें, ठीक है, प्रेजुडाइज नहीं होना है। Next is fact, obviously क्योंकि journalism news is the information about current event which has facts. If there is no facts, this is not journalism. Next is reporting, writing and editing, very important process, reporting, writing and editing. In actual journalism based on these processes, reporting, writing and editing. Okay, so first is reporting definition. News reporting is a process of discovering all relevant content, ठीक है। means news reporting means first discover the relevant content, means relevant means discuss the news relevant content, ठीक है, and selecting them and then
presenting the important facts and preparing a comprehensive story. आपने फर्स्ट कलेक्ट करना है मटेरियल एंड देन उसको प्रेजेंट करना है. कैसे प्रेजेंट करना है? उसके अंदर आपको फैक्ट्स डालने हैं, जो फैक्ट्स नहीं है उसको कट आउट कर देना है. प्रिपेयर करना है एक न्यूज स्टाइल में. कुछ न्यूज रिटन स्टाइल होता है तो उनको फॉलो करते हुए आपको एक कंप्रेहेंसिव स्टोरी, न्यूज स्टोरी बनानी है. ठीक है. अ पर्सन हु हैव डन दिस जॉब इज कॉल्ड न्यूज रिपोर्टर. जो ये वर्क करता है वो न्यूज रिपोर्टर कहलाता है. टाइप्स ऑफ रिपोर्टिंग, इट इज नॉट द टाइप ऑफ रिपोर्टर, इट्स जस्ट टाइप्स ऑफ रिपोर्टिंग. ठीक है. जर्नलिज्म में एक टर्म है जो बहुत कॉमनली यूज होती है, दैट इज बीट. बीट होता है कि अलग अलग टाइम, जैसे क्राइम है तो वो एक क्राइम बीट है, इन्वेस्टिगेशन है तो वो इन्वेस्टिगेशन बीट है. तो इट्स द टाइप ऑफ रिपोर्टिंग इज जस्ट बेस्ड ऑन इट्स बीट. ठीक है. इफ देर इज वर्क ऑफ इन्वेस्टिगेशन देन इट इज इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग. वर्क ऑफ कोर्ट एंड केसेस will include in court reporting, accident and वाइस वर्सा. ऐसे ही ये कंटिन्यूसली हो जाता है. ठीक है. पॉलिटिकल रिपोर्टिंग, फैशन रिपोर्टिंग that are relevant with the fashion industry, business reporting who are broadcasting related to the business, sport reporting who are connected with the sport. ठीक है. एंड स्पेशलाइज, किसी भी पर्टिकुलर चीज में स्पेशलाइज रिपोर्टिंग इसके टाइप्स हो जाती हैं. नेक्स्ट इज क्वालिटीज ऑफ अ रिपोर्टर. ठीक है. If you are a reporter and if you want to be a reporter, then these quality you have. ठीक है. It is must to have these quality. First is news sense. Obviously, if you are working in the field of journalism, then you know the what the actual news is. ठीक है. News sense. You have news sense. Next is clarity. ठीक है. Whatever you want to say, speak just clear. ठीक है. Third is alertness. Obviously, while reporting, you should alert what's happening, what can be happen. क्योंकि आप एक rush में and you take bite, आप bite ले रहे हैं किसी की, तो you have to be alert क्योंकि anything can happen. ठीक है. क्योंकि incident हो सकता है कुछ भी, तो you have to alert. Curiosity. Journalists are curious to know new things. अगर हम during interview, during taking bite, if the front person do not want to tell that answer, then how curious you are, क्योंकि आपको निकलवाना है उसका आंसर. तो you curiosity, it is necessary to have curiosity. ठीक है. Speed. If you are lazy, you can't work in the field of journalism. Obviously, speed. ठीक है. Mobility. You are eligible to go anywhere. ठीक है. You are eligible to mobile. ठीक है. मोबिलिटी होनी चाहिए. पंक्चुअलिटी, इट इज नेसेसरी इन एवरी प्रोफेशन एंड एवरी फील्ड. यू हैव टू पंक्चुअल टुवर्ड्स योर ड्यूटी. फियरलेसनेस एंड फ्रैंकनेस, यू कांट शाय. अगर आप एक जर्नलिस्ट हैं, आप एक रिपोर्टर हैं, तो इट इज नीड टू हैव फ्रैंक. बी फ्रैंक, डोंट शाय. ठीक है. बी फ्रैंक. Next is types of reporter. It was the types of reporting and now it is the types of reporter. ओके. फर्स्ट इज असाइनमेंट रिपोर्टर, यानी ये आ जाएगा जो जितने भी बीट्स की किसी भी पर्टिकुलर असाइनमेंट दिया हुआ है तो पर्सन जो पर्सन उसके लिए काम कर रहा है वो होता है असाइनमेंट रिपोर्टर. नेक्स्ट इज फ्रीलांसर हु आर नॉट कनेक्टेड विद एन पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन, जो किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन से नहीं कनेक्ट है या पर्टिकुलर कंपनी के लिए काम नहीं कर रहा है, दैट इज फ्रीलांसर. ठीक है. वो फ्रीलांसर कहा जाता है. वो कहीं से भी कुछ भी नहीं यूज करके किसी को भी ट्रांसफर कर सकता है. पेड होता है, फिर उसके पे ले लेता है. ठीक है. थर्ड इज बीट रिपोर्टर. किसी भी पर्टिकुलर बीट पे जो काम कर रहा है वो है बीट रिपोर्टर. नेक्स्ट इज राइटिंग. जर्नलिज्म एंड न्यूज राइटिंग इज अ प्रोज रेदर देन पोएम एंड राइम्स. ठीक है. यहाँ पे पोएम राइम से रेदर जो राइटिंग होती है, स्टाइल यूज्ड फॉर रिपोर्टिंग इन न्यूज़पेपर. ओके. Sorry for interrupt. Okay. So news writing has facts and timely report on current event. While you are while writing the news, you should follow some guidelines. ठीक है. These guidelines are like this. Organization. People have a tendency to tell a story chronological. Actually, the inverted pyramid style and chronological style are the style that is used to write the news story. I will discuss it you later. ठीक है. Headlines. Actually, headline is very important thing. ठीक है. If you are writing the news, then you have to write a good headline, because headline is the only thing that help to grab the audience. Headline audience grabber होनी चाहिए. You must tell maximum information in minimum word. ठीक है. क्योंकि हेडलाइन अगर अच्छी होगी तो पीपल विल टेक द इंटरेस्ट टू रीड द होल कंटेंट, अगर हेडलाइन बेस्ट होगी. फैक्ट. As I already told you, don't include your own opinion, don't include your
personal perception. Just tell the facts. Identification. Identify what are you saying, who identify. Just to 5W1H, these are very important term in the field of journalism. 5W मतलब who, किसने हुआ, किसके साथ हुआ, क्या हुआ, what happened, when, कब हुआ, how, कैसे हुआ, ठीक है. So just identify. Short paragraphs. Use short paragraphs because people are will not take interest to read more, ठीक है. They only just want to know maximum information in just minimum words. So short paragraphs. If content is big, then you can separate, तुम उसको छोटे छोटे पैराग्राफ में प्रिपेयर कर सकते हो. लीड होता है द सेकंड द आफ्टर द फर्स्ट पैराग्राफ आफ्टर द हेडलाइन, ठीक है, वो होता है लीड. फिर होता है सेवंथ इज यूज 5W1H मींस हु, व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन एंड हाउ. कोई भी इंसिडेंट हुआ, हु किसने किया, व्हाट क्या हुआ, वेयर कहाँ हुआ, व्हाई कैसे क्यों, व्हाई क्यों हुआ, व्हेन कब हुआ, एंड हाउ. ये जो 6 टर्म्स है ना, इस पे ही टोटल कंप्लीट आपका न्यूज स्टोरी बेस्ड होती है. The most common style of news writing is inverted pyramid style, hourglass style, chronological style. Let's learn about it. Oh, so first is inverted pyramid style. Guys, this style is most common in the field of journalism. बहुत ज़्यादा यूज हो जाने वाला, सबसे ज़्यादा यूज होने वाला स्टाइल है inverted pyramid style. Okay, सो फर्स्ट इज द लीड, ठीक है. लीड न्यूज कैसे लिखी जाएगी, फर्स्ट राइट लीड जिसमें इंक्लूड करना है हु, व्हाट, व्हेन, वेयर एंड व्हाई. जस्ट टेल हु, व्हाट, व्हेन, वेयर एंड व्हाई. इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज it is audience grabber, ठीक है. If lead is good, then audience will take interest. Next, body. It just tell the background of information and arguments, evidence. It tell the story, it explain the story, है ना. And last is the tail. The tail means it include extra content. ठीक है, कोई रिसर्च बेस है या फिर हम कोई भी कंटेंट रिलेवेंट कर रहे हैं कि ये वाली जो आज जो इंसिडेंट हुआ है ये कहीं ना कहीं उससे लिंक हो सकता है, तो लास्ट में, सबसे लास्ट में हम क्या बताते हैं, कोई भी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन, कोई एक्स्ट्रा कंटेंट होगा वो. तो इस स्टाइल में अगर न्यूज लिखी जाती है. या फिर होता है आर ग्लास स्टाइल. means at the top just summarize the news, what the news is, and then suddenly it take the turn, ठीक है, and then it narrate that, it finally tell the story, what was the whole story is, ठीक है. It is the hourglass style. Last is chronological style. Chronological style is also very popular. Actually it is run as the incident is happening. जैसे ही इंसिडेंट हो रहा है वैसे स्टोरी टेल करते जा रहे हैं कि लीड आज ये हुआ, फिर कल ये, डेट वाइज स्टोरी बताते जाते हैं. फाइनली इसमें क्लाइमेक्स जो है मिल जाता है, ठीक है. फोरशैडोइंग मींस, हियर फोरशैडोइंग मींस मतलब एक अनुमान लगाना फ्यूचर में, इन फ्यूचर में बी इट विल हैपन. तो ये सब टेल करता है इसमें. ये होता है क्रोनोलॉजिकल स्टाइल. इट इज ऑल्सो पॉपुलर, ठीक है. लास्ट एंड फाइनल इज प्रिंसिपल्स ऑफ जर्नलिज्म. Okay, its first principle is truth and accuracy. As journalism play a vital role in our economy to build the perception of the people, and as it is the fourth pillar of our democracy, so it has some principles that a journalist should have to follow. That first is truth and accuracy. Obviously, journalist कभी भी गारंटी नहीं देता कि वो ट्रूथ ही बोलने वाला है, बट उसको गाइड किया जाता है कि दैट यू हैव टू बी एक्यूरेट, ठीक है. just show the relevant, don't show any relevant content, just show the fact, ठीक है. if you are not showing fact, then tell that कि सब न्यूज में आपने देखा होगा कि एंकर बोलता है कि अभी इस पे और इंफॉर्मेशन, इन्वेस्टिगेशन चल रही है. अगर इन्वेस्टिगेशन चल रही है तो यू हैव टू स्पीक दैट कि इन्वेस्टिगेशन चल रही है, डोंट टेल कि ऐसा हो गया है, ठीक है. सो ट्रूथ एंड एक्यूरेसी. इंडिपेंडेंस. जर्नलिज्म इज एन इंडिपेंडेंट वॉइस. आपको कोई प्रेशराइज नहीं कर सकता. यू आर जस्ट फ्री, ओके, बिकॉज यू आर द वॉइस ऑफ पीपल. तो इंडिपेंडेंट, यू आर इंडिपेंडेंट टू ब्रॉडकास्ट बट नॉट इंडिपेंडेंट टू ब्रॉडकास्ट एनीथिंग. यू आर इंडिपेंडेंट टू ब्रॉडकास्ट ट्रूथ, however whatever the truth is, कुछ भी सच आपको ब्रॉडकास्ट करना है, यू आर इंडिपेंडेंट फॉर दैट. फेयरनेस एंड इम्पार्शलिटी. यू कांट बी पार्शल. अगर आप दो साइड की स्टोरी दिखा रहे हैं तो यू हैव टू शो बोथ साइड, यू हैव टू शो द परसेप्शन ऑफ बोथ साइड, ठीक है. बी एक्यूरेट, बी फेयर, बी डोंट बी इम्पार्शल, डोंट बी बायस्ड, बी अनप्रेजुडाइज्ड, ठीक है. तो फेयरनेस एंड इम्पार्शलिटी. फोर्थ इज ह्यूमैनिटी.
Before any profession, before any anchor, reporter, first you are human. Exactly, you are independent, you have right, but you can't tell anything. ठीक है, फर्स्ट यू आर ह्यूमन. अगर आप किसी क्राइम क्रिमिनल की बाइट ले रहे हैं, किसी क्रिमिनल का इंटरव्यू ले रहे हैं, तो डोंट थिंक ये क्रिमिनल है. फर्स्ट यू आर ह्यूमन एंड दैट पर्सन आल्सो ह्यूमन. सो ह्यूमैनिटी. फिफ्थ इज अकाउंटेबिलिटी. It is the responsibility कि if you have done any mistake then accept that. ठीक है, आप अगर आपसे कोई गलती हुई है then accept that. Be accountable yourself. खुद को अकाउंटेबल बनाएं. ठीक है, कुछ भी अनफेयर नहीं बोलना है ना. तो बी अकाउंटेबल. इफ यू हैव डन एनी मिस्टेक देन एक्सेप्ट दैट. or if a person is a person is comment any if person is telling you any defamation content, then don't be shouted, be silly. ठीक है, अगर कुछ हुआ तो उसको सिली रहना, अकाउंटेबल बनना है, उसमें खुद भी अनफेयर नहीं होना है. ठीक है, सो दीज आर द प्रिंसिपल्स दैट जर्नलिस्ट हैव टू फॉलो. So, guys, hope so you like this video. And if you have any query, any doubt, then please mention your question and query in comment box. I will definitely give you answer in next session. And for more informative video, please stay tuned with us on Swan Livelihood. Thank you. Hope so you like this video. Thank you. Take care.